All right. So yeah, so against this backdrop, CFA Institute has actually eased our task. It has given us some standards of professional conduct. Why? Because again, it would have been like a very, very long discussion. So what it has done is it has divided the whole discussion into some seven standards. These seven standards they also have. So again, it's just written, these substandards are just written for professionalism, but there are substandards in each of these standards from standard number 2nd to standard number 7th. So in these standards, we will learn what is good for our clients, what is good for our capital markets, what conduct, what behavior is appropriate, you know, you being an employee, you being a supervisor, and there are like some various situations, you being a portfolio manager, you being an equity research analyst, all these designations that you can think of, you being an investment banker. So one thing that I would like to tell you all is that these standards of professional conduct, of course, it's not in place today. It's been decades now that they have been in place. So during today's session, you might think that, you know what, if CFA Institute is saying something like this, I might want to differ because I have this kind of an opinion. I would respect you for that. But however, chances are that, you know what, CFA Institute might not look at you at an individual level, because these standards have been here, the content have been prepared by consulting majority of the CFA charter holders over decades. Majority of CFA charter holders as well as other stakeholders also, let's say regulatory bodies in different countries, other agencies who are closely relating to and working with for the well-being of capital markets. So majority of CFA charter holders, they've given their opinion, and that is how we've got this material. So do, you know, keep yourself, have a very open mind. That's what I want to tell you. And be interactive, because obviously I'm going to ask you a couple of questions, and by answering those questions, you will be on the right track. If you will be silent, if you will not be answering the questions that I'm going to ask you, then how will you attempt the questions which will come while you're reading your curriculum material or your Schweizer material, or maybe, you know, you're doing your question bank. And if you're not doing that right now, then in the final exam also, you'll not be able to activate your gray cells. Gray cells means your thinking cells. So we kind of have to activate our gray cells over here within these hours that we all are together. Because see what, you know, you give an answer, somebody else also, you know, would think that, yeah, this is a possible answer, and even I agree to this. But then I might come back saying you, I know and I understand and I appreciate you, but majority of CFA charter holders have given this opinion, and that is why CFA Institute has said that, you know, this is the right thing and avoid this thing. So it is between right and avoiding something. Wrong, clearly, blatantly wrong, will also come as well. They'll be like far and few. Mostly it will be a battle between this is good, this is acceptable, this is also okay, but then we have prioritized something else in the content. So yeah, here we begin. We begin with our first standard. And our first standard, again, you have written it down. I would say just turn your page now. Turn your page of that book. If you can, if you have like a brand new book, you keep it for ethics, that would be like the best thing. Right now, if you do not have, okay, you can do it later also, but dedicate one notebook, especially to ethics. So we begin with standard 1A, knowledge of the law. And the thing that we have to kind of now concentrate more is the first and foremost gist, that is given by the institute to us, because this is kind of actually summarizing the standard for us right away in the beginning. It summarizes standard 1A for us, which is knowledge of the law. And then what we will do is, after we have summarized and kind of, you know, understood what this is all about, then we can go on to discuss about the key points. Next, what we will do is, we will also kind of look at some other important points. If there are, in knowledge of law, there is, so I've put it over here.
Then we will also go through at least one example. And I really want all of you to participate when I am asking you questions. Over here, it is okay. We will kind of first try to understand. But when the questions come, all of you have to participate. That's really very critical. We got to do this right now within this session itself. All right. So members and candidates, as I just mentioned, all these standards are not just for us. This is for you guys as well. Members and candidates, the keyword is and, must understand and comply with all applicable laws, rules, and regulations, including the CFA Institute Code of Ethics and Standards of Professional Conduct. So I've been talking about ethics, I've been talking about standards of professional conduct. They have been given to us by CFA Institute. Of any government, regulatory organization, licensing agency, or professional association governing their professional activities. In the event of conflict, members and candidates must comply with the more strict law, rule, or regulation. Members and candidates must not knowingly participate or assist in and must disassociate from any violation of such laws, rules, or regulations. So now there are like at least 3 things over here. So can we just say this is point till here, it is point number 1. For here, this is point number 3, 2, and the final one, this is point number 3. So 3 things we are going to talk about. First of all, a couple of us are already working, a couple of us are already, of course, planning to work also, maybe in the near future, maybe in some distant future. But then obviously we all would want to become part of investment management industry one day. So when we do that, we will be, there will be a requirement for us to comply with all the rules, all the laws that is governing our professional activities, right? So over here, it is not about any question. Okay, so over here, it is not to do with all the professional activities which your fellow CFA charter holders may be doing. No. It will be relating to your job, the role that you are employed in. You have to be concerned about understanding applicable laws, rules, not just about your own country, but even of some different countries, especially if you are in an MNC setup. So any government, again, it should be like applicable to you. It should be applicable to you, your own job. Right now, we are not concerned with anybody else. What I am doing, Sandeep sir is doing, somebody else is doing. Right now, you're not going to be concerned about that. So let us say, in fact, we have bankers over here. So maybe, Vivek, Shashank, are you guys here? So can you guys please let us know, maybe Shashank or Vivek, any of you can let us know that are there rules, laws that you have to follow as a banker? Yes, madam. Yes, And yes, any examples? Ma'am, confidentiality. Very true, confidentiality. What else? And who's giving all these rules to or laws to the banking industry? Who releases all these rules? Ma'am, actually, Government of RBI India. is the regulatory body. Yeah, right. And they percolate all the rules, regulation for us how to conduct. Actually, 1948, a banking rule we follow. And apart from that, while training, frequent training and frequent guidance, what we receive from our higher ups, we follow simply that. Very true, very true. So we've got RBI over here, we've got our government over here. Similarly, had you been involved in insurance industry, then there is something known as IRDA. So the key point or the takeaway point over here is that when you're going to be employed or you are currently also employed, you have to comply with few applicable laws, rules, and regulations. And if you are not following them, you are violating not only the rules and regulations set by your bank who has employed you, but even CFA Institute. This is the most important thing which you should right now write down also, that if there is a violation, if you violate by not complying to an applicable law, rule, or regulation. So if there is a violation,
something will happen on your employment front, so your supervisor will do something about it, it is also a violation for CFA Institute also, because they have also asked you to comply with all the applicable laws, right? So the key point is that ideally we should not violate any rules, any laws, any regulation that apply to our professional activity. Again, there are, you know what, there are actually two, I would say, why is my eraser not working? Just one second. Okay, so there are actually 3 points over here, or 3 areas from where we will get these applicable laws, rules, and regulation. This is one, that is our standards. So this is, yeah, it's given by CFA Institute. The second one is the country in which the member resides. And the third one is the country where the member is doing business. Now you may be from India, right? Currently also you are residing in India because it's pandemic time and you think that, you know, let me be here close to my family, etc. But however, you are employed and you're given employment by a US based firm. So you will be deemed to be doing business in US as well. Over there, your US based client probably might have even outsourced the work to India, to Pakistan, to other countries also. Irrespective, there will be laws that you as a candidate or member, you have to follow because you are residing in India, or because you are associated with a US based client. And the rule is that you have to follow the most strict of these rules, laws. We're going to go through one example or two examples, so don't worry. Write down, for now, just write down that you have to follow the most strict of these 3 things. One is given by the institute, second, maybe from where you are residing, and third, where you are doing your business. As an Indian citizen, it may be a case, one second. Yeah, so as a citizen of India, it may be a case where you just have to comply with Indian rules. So, you know, Vivek and Shashank are over here, they are bankers, they just have to concentrate on Indian rules. However, the moment, you know, they probably, if they are associated with HSBC, then and they move on to Singapore, but they are also taking care of Indian operations, because probably they very well know the Indian rules and regulations. They know Indian capital markets and whatnot, and how banking industry operates out of India. But they move to Singapore in HSBC. Irrespective, what is going to be more and critical aspect for you is follow the most strict rule. Follow the most strict rule. I hope you guys have also written this down. Again, please, as much as you can, write these down. The last key point over here is that so we take care of point number 2, that in case there is an event of conflict, because there are rules given by Indian government, there are rules given by US government, there are rules given by banking operations in HSBC, in Singapore, etc. If there is some conflict, then you have to comply with more strict rule, law, etc. The last point is that if you think that your co-workers or your clients, they are not doing something good or in the right direction, report violation. Report violation to CFA Institute directly. And in your curriculum also, you are given that email ID also, wherein you can just shoot that email, and you can do that even being a candidate, but a registered candidate, all right? A registered candidate. So many a times what happens is that you clear, where, you know, candidates, they clear their level 1 and they're on to level 2, but they don't register. They register somewhat at a later time. So we will not be considering them as currently registered candidates. All of this is applicable to members and candidates and currently registered candidates. Okay. But, you know, I don't think that you should think that way. If you have registered even for once, you've paid the initial registration fee, then I think till the time you are being part of this program, till the time you become even CFA charter holder and a member, and later on also, I guess you have to comply.
So don't take it lightly at all. So on to the next slide, what I have done is, because there was some confusion as to, how to go about it. So I have created these situations for you. So we can just discuss this out. And by perpetrator simply means somebody who has actually, the violator. So this is with regards to the last point only. So you see that whoever is violating this particular standard, maybe knowledge of law, or maybe some other thing also, he or she will be known as a perpetrator. So your step number 1 will be, first of all, you have to say, or you have to consider, is it a coworker, your coworker, or is it your client, or is it your employer only? Imagine, you can even do that for your employer only. You can do that even by not really reflecting your own name, in which case the technical word is you become a whistleblower. Whistleblower. So, but yeah, here it's all very different, because we are going to report these violations, and we are talking about reporting these violations to CFA Institute. I don't think so there will be a lot of issues if we just kind of, take it out and just let them know, because it will be for the benefit of our overall industry also only. Whistleblower is a technical word, which is, you are employed there and directly want to take it to any government body, any regulatory authority. So that is how this whistleblower technical word has come from. All right, back to our content over here. So perpetrator is step number 1, even if it is your coworker or client or employer. Step number 1 is always going to be, yes, please. Ma'am, please explain whistleblower again. Sorry, which one? Whistleblower. Yeah. So who is this, first of all? Please speak your name. Gaurav. Yeah, Gaurav. Actually, why am I saying is now, of course, it's just for the benefit of everybody else. So do you remember that some months ago for Infosys, do you remember that for Infosys, there were few people who were part of the accounting team? I think accounting team only, or controllership or somewhere like that. So what they did was they reported to the government of India, they reported to SEBI and other regulatory bodies, and Infosys securities are also listed out in US. So they also wrote a letter to Security Exchange Commission, which is a regulatory body based out of US, that the management of our company has done some fraudulent things. What they have done is that they have manipulated the financial statements of our company. But this team, whatever it was, we really do not know. Could be like a 2-member team, 3-member team, 4-member team. They did not disclose their names. When you do not disclose your name, but you just right away send an email to government or regulatory body, it means that you have become a whistleblower. You have blown a whistle against your company. Okay, Gaurav? Ma'am, this is illegal or not? Yes, please. Ma'am, this is illegal or not? It is legal. The identity remains anonymous. Yeah, exactly. Better way to say, in fact. You're not revealing your true identity or your original identity. बस आप इसमें क्या कर रहे हैं ना, आप नेम्स नहीं बता रहे, दैट्स इट, अपने नेम्स नहीं बता रहे, बट जो आप करना चाहते हो वो आप कर रहे हो. It is very much legal. So and Infosys is just one example. There have been multiple examples. So whistleblower generally is concerned with a body outside the organization, or it can be within the organization? No. Whistleblower means you are part of that organization. You are very much employees. No, I am the very much employee, but the action taking body I mean to say. Yeah. Yes. Outside. They can be outsider or they can be within the organization. Most likely.
so you are saying that here I have taken example of management. You are saying if they have to be necessarily within the organization or outside organization? Yeah, actually, suppose if I have a if I am the whistleblower, Yeah. and our top management will be taking care of it, or it will be out of the organization. Somebody else will be there in that, because it will be within the It software, will be, no? I will tell you what, management will nowhere be here. It is against the management, right? So it will be between employee and the regulatory authority or government, directly between them. A simple email also. And nowadays what whistleblower do is, because they want to harness the power of social media, they just, again, anonymously only, what they do is they just, give a copy, kind of try to share a copy with the media, the social, on social media platforms that, this has happened, so that it receives its due attention. Okay. So yeah, so step number 1 will always be that you would want to discuss things directly. Discuss things directly with your coworker, with your client, with your employer. But the second thing step number 2 is kind of different over here. So step number 2 is that if it is your coworker, then you just inform your employer. You inform your employer why your supervisor is your boss or your direct hiring manager. And then there is something known as compliance department. Compliance department, from its word compliance, matlab hi yahi hai, jo comply karenge, comply, the department which will ensure that sare ke sare rules, regulations comply ho rahe hain. And this is what we also said, comply. So compliance department is there in a lot of organizations, and really makes a lot of sense for us also to reach out to them if we think that our co-worker is violating a rule. So if it is your client, then what would you like to do? You would not like to work with that client. So probably you can do 2 things. You can ask for a new assignment, which doesn't involve that particular client. Or second thing that you can do is that stop advising that client. So basically net, what you would wish for from your employer is, I do not want to work with this client. He's asking me to do some things which are violating the code and standards or the applicable rules, regulations of government body or regulatory body. I do not wish to be part of this project. So move out. What if it is directly with your employer? Because I have already given you one example from Infosys, but because we are part of investment management industry, as analysts, more or less our work will be revolving around creating research reports, analysis, recommendations. You kind of just ask your name to be removed because you thought that your boss only has asked you to do something which is incorrect. So you would want your name to be removed from those road reports, these recommendations. And in very, very extreme cases, it can even you can even think about terminating your employment. It comes as a shocker to candidates, but yeah, this is very much there even in the curriculum. I haven't put it from my side. They are also saying that if situation becomes just too bad and you really do not want to work with this employer because it's violating rules left, right, and center, then consider your resignation and just terminate your employment and move on to a better ethical company. Because overall we want our capital markets not to suffer. That's our ulterior motive. We want the integrity of capital markets to be intact. So with all of this, and I hope somewhere here or there, you're also writing down some key points. You don't have to kind of write down this entire thing, the gist, don't do that, but some critical points. Start writing down, start creating your notebook. So I have the first question for you all, and this is like very, very simple. So in situations where the laws of a member or candidate's country of residence, local laws of the regions where the member or candidates does business. So one is your country of residence. The second one is your local laws, because what happens in US is, and CFA program, although globally recognized and globally renowned program where CFA charter holders are from all parts of the world. It originated from countries like US, countries like where even till today, US and Canada boasts of a large number of CFA charter holders. So in these countries, we also have states-wise rules and laws.
So members not only have to look into consideration the central government laws, what the central government have come up with, but they also have to comply with their local laws, their own provinces or states laws. So one could be your country of residence, one could be your local laws, or where the candidate is doing its business. And then third, obviously, CFA Institute has given code and standards. So they specify different requirements. सब कुछ अपना अलग-अलग बोल रहे हैं. So what will you do? The member or candidate must abide by. Please read down, on your own. You can just read these options and tell me the right Option answer. C. Option C. Yes. Who else? Who else wants to go with option C? Yes, Yeah. this option C. Option C only, the stricter of the local laws. Great, Country great. laws. Ma'am, So, yes, please. ma'am, if the management gets to know that some of their employees done something whistleblowing, then what? So what will happen is that we have a different section over here, standard rather, and yeah. So we have a different standard, which is as your employers. Okay? So we will park this discussion, discuss over here. Please write down that you had a query. Okay? But we will discuss when we discuss standard number 4th. All right. So we also have another example. This example is that applicable law doesn't require members to disclose referral fees received from or paid to others for recommendation of investment products and services. ये कहाँ पे हो जाता है? Let us say that you are selling some insurance products. ठीक है? So वो investment products का क्या हमें भी अब example ले रहे हैं? Let us say this is your insurance का कोई product है, insurance. And you are already talking to your client. Now this client of yours is like, you know, a very well networked client. And you ask कि sir आपको पता ही है अभी pandemic situation है, I'm not even into life insurance होता तो मेरा business भी बहुत अच्छा हो जाता, I'm into this particular insurance, कुछ हो नहीं रहा, can you please refer me to your family members or to your fellow friends, etc. This is actually a very common thing to do, especially if you are in a sales role. So recommendations and referrals से ही तो हम आगे business करते हैं. But then you don't tell this client of yours that there is some referral fees also. There is some referral fees also received from or paid to. जब हम इनको recommend करेंगे, and ये insurance product आप किससे ले रहे हो? I'm not going to write down any name over here. Let us say ये जो आपके ये जो insurance product है, ये आप XYZ insurance company का उनको दोगे. Whereas in the market there are 10 other insurance companies also. Why? Because जितना आप business XYZ का करोगे, आपको उतनी referral fees, उतना ज़्यादा आपको commission भी मिलता जाएगा. But you don't disclose this to your client. So over here, obviously कुछ गड़बड़ तो लग रहा है. But in our code and standards, it is a mandate that you have to disclose this referral fees to your client. तो अगर अब आप disclose नहीं कर रहे हो, तब आप क्या कर रहे हो? आप violate कर रहे हो code and standards को. ठीक है? आप खुद वायलेट कर रहे हो तो फिर अगेन आपके अगेंस्ट भी कुछ भी हो सकता है, CFA इंस्टीट्यूट को आपके अगेंस्ट भी पता चल सकता है, so on and so forth. So ये जो सारा का सारा वायलेशन वाला पार्ट है, it is paramount for us to understand. Why? Because there are going to be two aspects. When I've already told you just है, summarized version है, which we will understand right in the beginning. You know what, just let me pause for a moment. There was someone from residing in Nigeria. So Amin, aap the na wo? So Yes, ma'am. yeah, so Amin, do you have any problems if I do use Hindi language? Yes, no problem. I belong Okay. to Delhi also, so it's okay Great. for me. Great. Yeah, most of us are here, from Delhi only, and in fact, for Nikita also, I think even though she is right now in Bangalore, but she seemed to have done her graduation in Delhi. So Nikita, you're from Delhi only? No, ma'am, I'm from Bihar. Acha, you're from Bihar. But again, Bihar to fir to you understand Hindi very well. Then to Yeah. it's all right. Okay. मैम ये वायलेशन किस कौन से वाले पॉइंट के अंदर इन्वॉल्व होगा जो भी आपने बताया इंश्योरेंस वाला? That you don't disclose that you will be getting a referral fees. Yeah, If this one.
या 1 सेकेंड, आई एम गोइंग टू दैट स्लाइड. सो क्या होगा कि रेफरल फीस का यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि आप अपने कोई जो आपका क्लाइंट था एंड उसने तो किसी का रेफरल दे दिया, राइट. बट आप ये नहीं बता रहे कि जो आप ये रेफर भी कर रहे हो, जो न्यू एम्प्लॉइज या जो सॉरी उनका जो क्लाइंट बेस भी बढ़ा रहे हो इस XYZ कंपनी का, उसके ऊपर भी आपको एक फीस मिलती है. राइट. अगर आप वो नहीं डिस्क्लोज कर रहे तो आपने वायलेट करा है. So can I just say and let me just cook an example over here. Cooking an example का मतलब मैं अपने आप से बना रही हूँ ये चीज को. That right now we are all associated and we are all on our CFI platform. So CFI आपको बोलते हैं कि you know आप तो हो currently registered हमारे student. Registered means you are currently a student of CFI. If you refer somebody who is your friend, so as an owner I will give you 5,000 rupees. मैं अपने आप से बना रही हूँ ये example बस आपके लिए कि referral fees होता क्या है. Now you refer your friend to CFI, ठीक है, आपको तो 5,000 rupees मिल गए, पर आपने अपने friend को नहीं ये चीज बताई. So if you fail to disclose this thing to your friend, you are violating this standard. ठीक है? Understood, ma'am. Okay, so that is it about standard 1A for now. और मैं आप लोगों को यही बताने वाली थी that there are going to be two angles over here. There are going to be two angles over here. So one angle is कि आपको violations के बारे में पता करना है, and second वाला angle है recommendations. तो ये तो चलो violations हो गई, फिर institute ने आपको recommendation भी बताया है कि फिर करो क्या? What is the right thing to do? Violations हो गई, wrong thing to do. फिर what is the right thing to do? I would highly recommend you कि आप लोग क्या करो. Again, I have been telling you कि इसको slow ही लेना है ethics को. अभी आप full focus रखो violations के ऊपर. अगर आपको पता चल गया कि ये violations हैं, तो automatically partly तो आपकी 50% तो recommendations वहीं से निकल जाएंगी. For example, now you know कि right recommendation क्या है. You will not violate any of the rules. You will follow the strict of these. Because if you'll not follow the strict, you are violating. Then the recommendation is that if you're saying that if you're yourself seeing कि कोई violate कर रहा है, then you report that violation. तो यहीं से ही आपके कुछ recommendations तो 50, 60, 70% तो यहीं से ही right recommendations बन जाएंगी. I would like you to focus on the violations because you unfortunately you have to memorize these violations. There's no way out. ये थोड़ा जो एथिक्स का जो पार्ट है ना, इसीलिए थोड़ा चैलेंजिंग भी हो जाता है बिकॉज यहाँ पे मेमोराइजेशन बहुत है. ये करना है, वो नहीं करना है. अभी तो वी आर ऑन जस्ट ऑन स्टैंडर्ड 1A. वी गॉट टू गो टू स्टैंडर्ड 7 जिसमें कितने मल्टीपल पॉइंट्स हैं. स्टैंडर्ड 1A है, B है, C है, D है. लाइकवाइज फॉर अदर स्टैंडर्ड्स आल्सो देयर आर मल्टीपल सब स्टैंडर्ड्स. तो थोड़ा मेमोराइजेशन, थोड़ा नहीं मतलब कि मेमोराइजेशन का एंगल आएगा ही आएगा, विच इज वाई गिव full time to understanding कि ये तो पक्का violations हैं, let me memorize them. इसके अलावा जो recommendations हैं, keep on reading them, and we are doing that also in today's class. I'm not going to leave recommendations, but for now this is how I want to go forward also कि पहले हम एक एक करके standards देखेंगे, at least for our standard number 1 which is professionalism, and then एक एक करके हम लोग violations देखते हुए finally फिर हम लोग read करेंगे recommendations को. Okay, so I move on to our standard 1B. This is independence and objectivity. तो independence and objectivity के आगे यहाँ पे क्या आप लिख सकते हो? Being independent means being unbiased. So now I'm going to read the gist. Members and candidates must use reasonable care and judgment to achieve and maintain independence and objectivity in their professional activities. पहले भी कुछ था in their professional activities, अभी भी है in their professional activities. Statements बस बदल गई कि आप जो भी आप काम कर रहे हो, you have to be careful. You have to be judgmental also. ठीक है? तो it is both, you know, the angle of art as well as science. And judgment obviously comes with experience. But the end objective is कि आपको independent रहना है और objective रहना है. So अब आपको क्या नहीं करना है
क्या नहीं करना वो डायरेक्टली यहाँ पे बताया गया है. Members and candidates must not offer, solicit, or accept any gift, benefit, compensation, or consideration that reasonably could be expected to compromise their own or another's independence and objectivity. मतलब एक तो आपको खुद केयरफुल रहना है, खुद जजमेंटल रहना है, खुद अनबायस्ड रहना है. दूसरा आपको ये भी देखना है कि यू आर नॉट पार्ट ऑफ एनीथिंग wherein you are compromising your values, your ethics. Ethics again means being on the right track. So we will be discussing this more, and I have few questions. I want all of you to participate. अभी अगर आप देखोगे yes no मुझे करोगे तो final exam तक हम जाएंगे. Do not worry अगर आप आंसर मुझे ठीक दे रहे हो या गलत दे रहे हो. Don't worry about that. Okay. So I have a couple of questions for you, one by one. Should you issue a buy rating on a publicly traded stock if asked by the client? अब आपको एक सेकंड I hope you आपको पता है कि as an analyst, and especially if you are tracking a publicly listed stock, let us say take ONGC, and you do your valuation, and then there is obviously a current market price at which ONGC is trading right now, but you do your valuation, and CFA curriculum is going to give you in-depth understanding of using tools and techniques of valuation, and you come up with the target price. If this current market price is lower than the target price, that means in future ONGC ka share price will increase. You may give a buy rating. If it's going to decrease, you may give a sell rating. So buy, sell, or you say कि अभी ना समझ नहीं आ रहा है, let me just wait and watch. You may give a hold rating. Next is कि completely avoid ही कर दो. कंप्लीटली अवॉइड कर दो. जहां पे कुछ भी आपको लग रहा है कि भाई ये तो कुछ घपला ही होने वाला है इस कंपनी के साथ, कंप्लीटली अवॉइड दिस राइट नाउ. सो आई जस्ट होप आपको लोगों को पहले से भी ये पता ही है कि बाय, सेल, होल्ड, अवॉइड ऐसी कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं जो एनालिस्ट देते हैं. सो नाउ यू एज एन एनालिस्ट, इफ योर क्लाइंट इज आस्किंग यू इश्यू अ बाय रेटिंग, विल यू डू दैट? यस मैम. मतलब आप करोगे, बाय रेटिंग कर दोगे उस पे इश्यू, आपका क्लाइंट बोल रहा है तो? No, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना. पहले तो आपको खुद अपना रिसर्च करना चाहिए. पहले आपको अपना वैल्यूएशन मॉडल खुद रन करना चाहिए, पूरा का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस खुद करना चाहिए, मार्केट को स्टडी करना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि बाय, सेल, होल्ड, अवॉइड क्या सिचुएशन है. ठीक है. क्लाइंट तो आपको ऐसे बहुत मिलेंगे जो कहेंगे बाय रेटिंग ही इश्यू कर दो, especially if they themselves are the business managers or business owners of these publicly listed companies. ठीक है मैम. यस मैम, इशू अ बाय रेटिंग का मतलब क्या है? हाँ, बाय यही मैं अभी आपको ये समझ आया. बाय, सेल, होल्ड, अवॉइड ये रेटिंग्स ही हैं मैम. ये एनालिस्ट जो क्लाइंट को देगा. या ओके. यहाँ पे आपको पता है कुछ मतलब इंडिया की जो सिचुएशन है इस टाइम पे, इट इज वेरी वेरी कंजीनियल, वेरी फ्रेंडली फॉर IPOs राइट नाउ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स. Dozens and dozens of companies, they are coming up with their IPOs. So right now it's a very good market also, and quite surprisingly, even in the pandemic situation also, the primary market, which is the IPO market, has kicked off very well, responding very well. Garnered so much of interest from both retail investors and institutional investors. तो अब क्या होता है, sometimes you are part of an asset management firm, ठीक है, asset management firm, wherein पहले से क्या होता है ना, that you have subscribed to, let us say, मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ, that you have subscribed to 100 lots of an IPO. Zomato ही ले लेते हैं केस, 100. However, जो सारा का सारा IPO है, it gets oversubscribed like hundreds of times. Let us say 300 times oversubscribe हो गया. That means जो आपका चांस है 100 lots मिलने का, वो 1/3 ही रह गया. वो बस 1/3 ही रह गया क्योंकि oversubscription चला गया. Now you are let us say you are a relationship manager. एंड यहाँ पे मैं तो सिर्फ रिलेशनशिप मैनेजर बोल रही हूँ, बहुत सारी डेजिग्नेशंस होती हैं. सो व्हाट हैपेंस इज कि you not only submit forms for your own from your own company's point of view on behalf of your clients. आप अपने clients के भी behalf पे इन lots को issue करते हो.
बट वो नेम किनका आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो नेम आपके एसेट मैनेजमेंट फर्म का ही आता है. Now you are this manager or this analyst, and this is like an oversubscribed IPO. Should you want to allocate shares to your own personal account? मतलब कि अगर शशांक है तो शशांक अपने पर्सनल अकाउंट जो उसका खुद का डीमैट अकाउंट है वो वहां पे शेयर्स को एलोकेट करे कि अपने क्लाइंट्स के अकाउंट्स को एलोकेट करे? हम क्लाइंट्स किसको प्रायोरिटी? सब क्लाइंट्स मुझे बताएं प्लीज. क्लाइंट्स. Client only. क्लाइंट्स. तो यहाँ पे हमारा क्या मतलब हो गया? इन केस देयर इज एन ओवरसब्सक्राइब्ड आईपीओ वी शुड गिव प्रायोरिटी टू क्लाइंट्स एंड नॉट टू आवरसेल्फ. यही यहाँ पे मतलब हो जाता है कि कोई भी ऐसा कुछ कंसिडरेशन हो गया या कुछ भी हो गया, आपको कुछ ऐसा नहीं करना so that you become biased. And here if you are allocating these shares to your personal accounts, you are being biased to yourself and no one else. आप अपना money, आप अपना इसमें monetary compensation देख रहे हो, but this is not the right thing to do. But if we do it for ourselves, that if we invest for ourselves, then अलग से अगर किया हो, हाँ, तो जो ये 100 लॉट्स थे और अगर 100 लॉट्स मिल गए, इन 100 लॉट्स में से आप कुछ मत करो. अगर आपने अलग से किया हुआ हो और अगर आपकी एसेट मैनेजमेंट फर्म को ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तब आप कर सकते हो. okay, ma'am. All right. My last, yes, please, then it please, is any questions are welcome here. मैम जो फिर क्लाइंट्स के जो शेयर्स थे उसको इग्नोर कर देंगे? क्लाइंट्स के शेयर्स को नहीं इग्नोर करेंगे. मैम जैसे अभी हाँ, आपने बताया कि अगर एसेट मैनेजमेंट फर्म को प्रॉब्लम नहीं होगी तो वो पर्सनल अकाउंट पे कर सकता है नहीं, लोकेट. मैं आपको बिल्कुल अलग बोल रही हूँ. अब 100 लॉट्स का तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं. 100 लॉट्स तो आपको आइडियली, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब सिचुएशन है, 100 लॉट्स के 100 लॉट्स आप क्लाइंट्स को ही दोगे. ठीक है, मैं तो बोल रही हूँ आपने अपना खुद से अपना जो पर्सनल डीमैट अकाउंट आपने अपना अलग से जो आपने एलोकेशन के टाइम पे जो आपने अलग से अप्लाई किया होगा, ठीक है. अप्लाई भी आप कैसे करोगे? अप्लाई एक तो आप एम्प्लॉयड हो, एक तो आप अपने कंपनी के बिहाफ पे करोगे, एक आप अपने पर्सनल भी तो कर सकते हो ना. यहाँ पे कंपनी को कोई लेना देना ऐसे नहीं है. और कुछ कंपनीज को होता भी है, कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स को होता भी है. मैं वो बात बोल रही थी आपको, that if your company is okay for you to applying personally and then you are allotted some shares of Zomato, then it is fine. My last question is, should you accept lavish gifts from your client? No. अगर it is personal then it हाँ, depends on मतलब पर्सनल ओनली. पर्सनल आपको ही दे रहा है क्लाइंट, डायरेक्टली आपको ही कुछ गिफ्ट्स दे रहा है, किसी और को नहीं दे रहा. आपको दे रहा है या आपकी फैमिली को दे रहा है? So Ma'am, ma'am, it what's totally wrong in depends that on them. actually? Yeah. So lavish gifts तो आप लोग प्लीज राइट डाउन कर दो. Lavish big no. Lavish big no. However, कुछ टोकन हो जाए तो ठीक है, टोकन गिफ्ट इज एक्सेप्टेबल. तो यहाँ पे आप प्लीज लिख लो, टोकन गिफ्ट्स आर एक्सेप्टेबल. मैम व्हाट इज द प्रॉब्लम विद लेविश गिफ्ट्स? मैम अगर वो पर्सनली दे रहा है तो वो according to CFA Institute they say then you will become biased towards that client. You will It looks unnecessarily like a spend bribe. more time for work of that client at the cost of other clients' work. हाँ जी, कुछ और भी कोई बोल रहा था? It looks like a bribe. Yeah. So they say that do not accept lavish gifts. अच्छा, इसमें एक और चीज है, आपको lavish gift मिल भी गया, आपको पता ही नहीं चला. फॉर एग्जाम्पल, आपको क्लाइंट, आप उसके साथ एक मीटिंग कर रहे थे, क्योंकि अब आप रिलेशनशिप मैनेजर हो तो आप करोगे ना मीटिंग्स उनको. अगर आपकी कंपनी अलाउ करती है तो अच्छे कैफे, अच्छे ये कुछ 4 स्टार 5 स्टार होटल्स में भी उन लोगों को आप लेके जा सकते हो, मीटिंग्स कर सकते हो एंड व्हाट नॉट. अब वहां पे क्या हुआ, दैट क्लाइंट वाज सो हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस कि अरे आपने तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इतना अच्छा कर दिया, यू वर एबल टू बीट द इंडियन इंडाइसेस आल्सो लाइक BSE NSE बाय अ वेरी हेल्दी मार्जिन. सो ही इज वेरी हैप्पी और वो आपको एक एनवेलप दे जाता है. अब उस एनवेलप में तो कुछ भी हो सकता है. तो अब वो दे गया और वो मीटिंग खत्म हो गई और वो एनवेलप आप उसके सामने तो ओपन नहीं करोगे, बाद में ओपन करोगे. तो अब बताओ आपको क्या करना चाहिए? अब आपको क्या करना चाहिए? आई विल टेल यू. यू शुड डिस्क्लोज ऑल दीज थिंग्स टू योर एम्प्लॉयर्स. डिस्क्लोज दिस टू योर एम्प्लॉयर्स. चाहे टोकन गिफ्ट मिल रहा है, चाहे लैविश गिफ्ट. वैसे तो लैविश गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना,
बट दे कुड बी अ सिचुएशन जब आप ना ही नहीं कर पाओ. आवर नेक्स्ट स्टैंडर्ड विच इज मिसरिप्रेजेंटेशन. एंड मिसरिप्रेजेंटेशन तो सबसे इजी है, सबसे इजी है. अभी तक जितने हम और भी करेंगे आगे, वन ऑफ द इजीएस्ट इज मिसरिप्रेजेंटेशन. मतलब इसमें क्या है ना, मतलब आप ना झूठ बोलो ना झूठ लिखो. हिंदी में जो मैंने आपको 2 लाइनें बता दी हैं, झूठ नहीं बोलना, मतलब यू शुड नॉट लाई. ठीक है. एंड मतलब होता है कि जो आप रिप्रेजेंट करो, जो रिप्रेजेंट करो, वो ट्रू रिप्रेजेंट करो, वेदर इन योर रिसर्च रिपोर्ट्स, वेदर इन योर रिसर्च रिकमेंडेशन, वेदर इन योर एनालिसिस, वेदर इन योर स्प्रेडशीट्स, whether in your verbal conversations, whether in your written conversations. Do not misrepresent. Represent whatever is true. So members and candidates must not knowingly make any misrepresentation. और ये मार्क कर दो यहाँ पे, तो must not knowingly, क्योंकि questions इसके आसपास ही आपके बनेंगे. That whether a particular CFA charter holder or whether a particular currently registered candidate उसने knowingly किया था कि उसने not knowingly किया था, और आपको उसी से determine करना पड़ेगा violation हुई है कि violation नहीं हुई है. Must not knowingly make any misrepresentations relating to investment analysis, recommendations, actions, and other professional activities. Now, again, bunch of questions coming your way, so be attentive. First question is, can you copy content from report which is authored by another analyst without giving him the due credit or her the due credit? Can you do that? No, ma'am. No. Yeah, so the answer is no. ऐसा नहीं कर सकते, हमें बताना पड़ेगा, ड्यू क्रेडिट देना पड़ेगा ओरिजिनल सोर्स को. Can you guarantee a fixed return from investment in stock market to your client? Ma'am, Fixed No. return बोल दे सकते No, हो मुझे. please. No, please. ma'am, अगर we copy content from reported authored by another analyst, Yeah. then we should violate standard 1B. अभी तो यहाँ पे 1C रिप्रेजेंट 1C होगा. मैम अगर हम दूसरे किसी कॉपी करेंगे तो इसमें हमारे ओवरऑल independent पता, मैं आपको decision- यही बता रही हूँ, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, सही सोच रहे हो. 1B, 1C, 1D, 1A, देखो हैं तो सब प्रोफेशनलिज्म के अंडर ही हैं तो सब प्रोफेशनलिज्म के अंडर. अब मैंने आपको बताया था ना कि कुछ पॉइंट्स आपको मेमोराइज करने हैं, कुछ वायलेशंस आपको स्टैंडर्ड्स एंड सब स्टैंडर्ड्स में ही आपको मेमोराइज करनी है. तो यहाँ पे ये क्लासिक पॉइंट आता है कि when you are copying content which is authored by some other analyst and you do not give any credit to that, you have violated standard 1C. I am sorry, but I cannot tell you कि you have also violated 1B here. नहीं, because clearly यहाँ ये 1C ही violate हो रहा है. ठीक है. So थोड़ा हमको वही प्रैक्टिस के साथ, थोड़ा हमको केसेस बाय केसेस देख देख के मेमोराइज करना पड़ेगा. तभी मैं कह रही हूँ इसके लिए आप नोटबुक अलग से बना लो, जहां पे आप ये केसेस ही लिख लो. Okay. So second question, can you guarantee a fixed return from investment in stock market to your client? No, ma'am. No. Again, no. तो कहाँ पे फिक्स रिटर्न गारंटी कर सकते हो? स्टॉक मार्केट में तो नहीं कर सकते, कहीं और कर सकते हो? Mutual fund. म्यूचुअल फंड भी तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. Fixed deposit. म्यूचुअल फंड वाले तो बार बार अपने एडवर्टाइजमेंट्स में बोलते हैं, क्या बोलते Ma'am, रहते to हैं वो लोग? preference shareholders. टू Preference shareholders. बट वो भी शेयर होल्डर्स हैं, और अगर प्रॉफिट्स होंगे तो गारंटी नहीं दे सकते कि प्रॉफिट्स Government होंगे कि bonds. नहीं होंगे. Ma'am, like Government bonds. fixed या deposit. बॉन्ड्स में कहीं ना कहीं, बॉन्ड्स में आप सही जा रहे हो, बॉन्ड्स में, लेकिन बॉन्ड्स कॉर्पोरेट बॉन्ड्स नहीं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में गारंटी रहती है. यूएस ट्रेजरी जो डिपार्टमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, आरबीआई वाले अगर कुछ गारंटी दे देते हैं, वहां पे एज एन एडवाइजर आप भी गारंटी दे सकते हो. बट क्लियरली स्टॉक मार्केट में तो हम नहीं दे सकते. तो जहां पे आप देखो कि जहां जो एक अथॉरिटी है, स्पेशली विच इज अ गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट अथॉरिटी, जो वो लोग गारंटी दे रहे हैं, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स पे आप भी अपने क्लाइंट्स को गारंटी दे दो, बट नॉट अदरवाइज. अच्छा, नाउ इमेजिन योरसेल्फ दैट यू आर वर्किंग इन अ म्यूचुअल फंड and you are, as an analyst, you are preparing the mutual fund performance of the last 5 years. Let us say that you have this balanced fund which you would like to prepare a presentation and might pitch into some prospective investors. So should you eliminate poor performance? No, ma'am. No, ma'am. सब बताएं. Yes. No. Ma'am, Yes, poor करते performance. बोलो. मतलब eliminate करना चाहिए उसको, yes कि no? No, No, ma'am. please, ma'am. We No. have to look out everything. before Yeah. eliminating. या तो इसमें एक बायस होता है, जिस बायस का नाम होता है सर्वाइवरशिप बायस. हो सकता है that as a mutual fund
वो 1 2 3 4 5 इयर्स में आपने उस कंपनी XYZ को रखा, वो फर्स्ट 2 3 इयर्स में परफॉर्म ही अच्छा नहीं किया, फोर्थ और फिफ्थ में आपने उसको अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकाल दिया। बट अगर आप लास्ट 5 इयर्स का डेटा प्रेजेंट कर रहे हो, यू शुड इंक्लूड कंपनी XYZ विच वाज अ पुअर परफॉर्मर एज वेल। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो देन आप सर्वाइवरशिप बायस को केटर कर रहे हो, विच मींस जो सिर्फ सर्वाइविंग और अच्छी कंपनीज रह गई हैं, आप सिर्फ उनको दिखा रहे हो 5 ईयर परफॉर्मेंस में। ठीक है। नेक्स्ट इज शुड यू ऑफर फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस और एजुकेशन? No, ma'am. नेवर नेवर इन फैक्ट, है ना, जो आपका है आपको वही दिखाना चाहिए। बट हम रिज्यूमेस को बहुत फैंसी लिख देते हैं, तो अगर आप अपने रिज्यूमेस भी फैंसी फ्लोट कर रहे हो तो अब आप देख लो, फिर थोड़ा सा हमको केयरफुली उसको फैंसी फ्लोट करना पड़ेगा। सो आइडियली फैंसी फ्लोट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि आप कोई बहुत एक कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन मत लिखो, कुछ किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के मत लिखो। जैसे आई कीप ऑन रीडिंग ऑल दीज बिकॉज आई डू हेल्प कपल ऑफ बिगिनर लेवल कैंडिडेट्स टू गेट इनटू जॉब्स एक्सेट्रा, तो अगर मुझे कुछ दिख जाता है तो मैं डेफिनेटली हेल्प करती हूँ। सो आई लुक एट देयर रिज्यूमेस, और उन्होंने कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है बट अपने आप को एक्सपर्ट लिखा हुआ है, एक्सपर्ट इन फाइनेंशियल मॉडलिंग, एक्सपर्ट इन दिस एनालिसिस। सो ऐसे जो वर्ड्स हैं एक्सपर्ट, अभी हम वो लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। लास्ट वन, इवन दिस लास्ट वन इज वेरी इजी, जस्ट लाइक आवर 1C। बिल्कुल जैसे 1C इजी है वैसे 1D भी इजी है, इट इज मिसकंडक्ट। तो मिसकंडक्ट का क्या मतलब होता है in general sense? What do we mean by misconduct? Unusual behavior. Yeah, or wrong behavior you can say, है ना, unusual Wrong be, behavior. wrong be. Hmm. So members and candidates must not engage in any professional conduct, including you're being dishonest, fraud, deceit, or commit any act that reflects adversely on your professional reputation. आपको ये कुछ ऐसी चीजें करनी ही नहीं चाहिए. You have to maintain your professional integrity and competence. तो यहाँ पे देखो फिर से वही word आता है, professional competence. So, you know, our behavior, let me just write this down, although we are not, obviously we are not fully aware of how derivative securities work, but at least सबको तो पता है कि एक तो stock market होती है, जो एक cash segment होता है, एक आपका derivative segment होता है, futures and options जहाँ पे होते हैं. So, cash तो जिसको हम कहते हैं spot market हो गई, तो futures and options आपको जो future में आएगा, अभी इसका जो pay off है अभी हमको पता नहीं है, अभी तो हम बस एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स बनाते हैं. सो बहुत सारी ऐसी डेरिवेटिव सिक्योरिटीज हैं जिनका पे ऑफ ना ऐसा है, ऐसा ऐसा, मतलब यहां नीचे नहीं मैं जा सकती. सो अनलिमिटेड अपसाइड, अनलिमिटेड डाउनसाइड. पे ऑफ मींस जो आपका प्रॉफिट होगा. Your behavior, your professional behavior, and even your behavior in these classes also, because as and when we are reuniting, or reuniting means as well as we are networking, we are in any kind of a formal kind of a setup. So if I'm making, if you know, the CFA is just like is just inviting you all on a lunch or so, that is informal, but these classes are formal. So as and when we are in a formal network amongst bunch of fellow CFA charter holders or members or candidates, अभी तो pandemic हो गया, before that हमारे यहाँ पे local events बहुत होते थे. Delhi is one of the most vibrant local chapter society of CFA Society India. When things were going very well, in a year we had 12 odd CFA Society local events here in Delhi, including some marquee events also like FTS and VIPS, that's Value Investing Pioneer Summit. तो उसमें क्या होता है, again, you know, when you go to these seminars or even if you're attending webinars, कुछ भी आप कर रहे हो, whenever you are networking, even if you're going for an interview or you're just like somewhere it is formal, then you have to exhibit your behavior which is the best. So you have to wear your professional hat all the time. तो होगा क्या, that if you're wearing your professional hat all the time, your behavior is up to the mark, you are able to maintain your professional reputation, integrity or competence in this industry, in investment management industry, you will have an unlimited upside. But if you're not doing that, then there will be unlimited downside. So कुछ questions हैं. Again, I would like to ask you guys कि आपके कुछ, आप बहुत सब employed हो ही, so should you misuse funds of your employer?
आपके No. एम्प्लॉयर ने आपको कुछ फंड्स दिए, उसको मिसयूज करना चाहिए? No, ma'am. या द आंसर इज नो। बट हम लोग कहाँ मिसयूज करते हैं बताओ? चलो आप लोग नहीं बताओगे, फिर कहोगे आपने अपना ही नाम बता दिया, बट मैं एक जेनरिक स्टेटमेंट दे रही हूँ। अभी तो मैं किसी कॉर्पोरेट के साथ फॉर्मली टाइड अप नहीं हूँ, तो शायद मैं बोल सकती हूँ कि जब हम लोग हमारा हाउस रेंट अलाउंस करते हैं, जब हम हमारा मोबाइल बिल करते हैं, तो देर इज दीज रीइंबर्समेंट फॉर्म्स. Why am I bringing this example is because this example is part of our curriculum also. दैट जब हम ये फॉर्म्स फिल कर रहे होते हैं तो कुछ गलत गलत बातें बता देते हैं, और रीइंबर्समेंट या तो जितनी, अगर लेटर सपोज इन इंडिया दे से कि आपको 1000 रुपीज पर मंथ मोबाइल बिल मिल जाएगा, बट आपका तो 800 आया हुआ है, पर आप उसको 1000 बना दो एंड यूजेज उतनी थी नहीं, तो एचआरए के लिए भी, क्योंकि वो डायरेक्टली आपका टैक्स डिडक्ट हो जाएगा एचआरए से, तो आप रॉन्ग रिसिप्ट्स दे सकते हो, सबमिट कर सकते हो. So these house rent receipts, or you can just show that you are living on rent whereas you are not living on rent. Why? Because HRA allowance will deduct your tax. तो ये कुछ चीजें ऐसी situations हैं जो even हम curriculum में भी examples पढ़ेंगे, which we should not do it, because then it is like, you know, a misconduct and it is a violation. Okay, now interesting one. Answer me carefully. Can you participate in peace protests outside your office? No, ma'am. ठीक है, एक नो आया, और बताओ. No, ma'am. चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है. सो दिस डिपेंड्स. ठीक है, ये डिपेंड करता है. तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन ही डिपेंड करेगा, और इसमें अब आपको देखना क्या पड़ेगा ना कि वो सिचुएशन है क्या. अगर सिचुएशन लिखा हो तो पीस प्रोटेस्ट का तो मतलब, जैसे हमारे फार्मर्स भी अभी दिल्ली एनसीआर बॉर्डर पे वो लोग पीस प्रोटेस्ट कर रहे हैं. नाउ देयर आर फ्यू पीपल who are not with them, but majority of Indians are with them. तो अब इसमें क्या हुआ, कौन गलत है कौन ठीक है, गवर्नमेंट गलत है गवर्नमेंट ठीक है? ऐसे ही वी कैन से कि कुछ पीस प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कुछ स्ट्राइक हो रही है, लेबर यूनियन स्ट्राइक कर रहे हैं अगेंस्ट द कंपनी, तो कुछ ठीक भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है. तो ये आपको ना क्वेश्चन को ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. ये अभी मैं यहाँ पे आपको एक जेनेरिक येस और नो नहीं दे सकती हूँ, कैटेगोरिकली येस और नो नहीं दे सकती हूँ. ये सिचुएशन टू सिचुएशन आपको देखना पड़ेगा. तो इसके आगे आप कहीं पे लिख भी लो दैट देयर विल बी सिचुएशंस in which if it's a proper conduct or if it is a misconduct for your company, for outside, for company, or some other related parties to your companies, other stakeholders of your organizations. तो ये कुछ केस टू केस आपको देखना पड़ेगा. ठीक है, बट अभी आप लोगों ने अगर नो बोला है तो अभी मैं उस नो को भी अभी मैं आंसर ले रही हूँ. ओके, द फाइनल वन. कैन यू कंज्यूम अल्कोहल विद योर कलीग आउटसाइड ऑफिस आवर्स? Yes, it also depends. हाँ. या तो अगर कोई कंपनी की ओर से ही कोई कोई पार्टी है जिसमें वो लोग कुछ प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और वहां पे अल्कोहल बैन था, बिकॉज दे वांट पीपल टू बी इन सेन माइंड, एम्प्लॉय सेन माइंड में होंगे तो बाकी जो क्लाइंट्स को बुलाया गया है, मीडिया प्रेस को बुलाया गया है, उन लोगों से इंटरेक्ट कर पाएंगे. तो अल्कोहल एम्प्लॉयज के लिए तो बैंड है, बट जो बाकी गेस्ट्स आ रहे हैं ना, उन लोगों के लिए वो अलाउड थी. बट आप उसको कंज्यूम कर रहे हो तो फिर तो वो तो वायलेशन है. बट अगर ऑफिस वालों ने आपको बोल दिया कि अब ये डिनर टाइम हो गया है, 10 PM हो गया है, अब आप भी कंज्यूम कर सकते हो, देन इट इज नॉट अ वायलेशन. Okay. So actually this keeps on happening at my husband's job. So he's employed in a real estate firm. So as and when they have product launches, so categorically they are, they're really told this, that what, it starts at about 7:38, drinks will be on house and everything else. They just keep binging on snacks. They don't even look at ki dinner laga bhi hai ki nahi laga hai. But after 10ish, 10:30, and even some of them are so nice, their colleagues, they are so nice that they wait for majority of the clients to go, कि 11:30 हो गए, अब तो सब clients भी चले गए हैं. So really it depends upon one's own behavior, one's own ethics. So यहाँ misconduct पे please कहीं ना कहीं आप लिख लो कि ना ये बहुत easy तो बहुत है, but ये situation specific होगा. ठीक है? So I'm going ahead with the second standard, but अगर हमको आज की क्लास में कुछ टाइम और मिलता है तो मैं और recommendations आपको definitely हम लोग इकट्ठे रीड करेंगे.
So now moving on to second standard, this is integrity of capital market, something that I've been telling all of you many a times कि end objective ही यही है. And इसीलिए आप देखो after professionalism ना directly they have introduced standard second, which is relating to capital markets. मतलब employers का बाकी चीजें, clients का सब कुछ अभी बाद में रखा है. सबसे पहले they have given importance to integrity of capital markets. अच्छा, anybody knows? So standard second A is about material non-public information, जिसका short form होता है MNPI. MNPI. किसी को कुछ आइडिया है ये क्या होता है MNPI? Material non-public information. So please. Information not to be shared with the public. Yeah, one thing is there. Very true, very true. Agar you have non-public information, then you should not share it with public until unless it becomes public by maybe the company or your client. So this is actually the second point. I'll read this out, but yeah, on the right track. What else could be MNPI? Material non-public information. Okay, don't worry, but please mark this as very important. Very important. Because ये खाली CFA इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मैं बोल रही हूँ आपको. अगर आप MNPI में अगर आप engage होते हो, you can go behind bars also. You can serve jail term also. I'm not joking. So standard second A, material non-public information, members and candidates who possess material non-public information. Now here is the definition that could affect the value of an investment. MNPI कब एक information MNPI consider होगी when it would affect value of an investment. They must not act or cause others to act on the information. तो ये नहीं कि खुद बच गए, किसी और को भी एक्ट नहीं करने देना है. अगर बाद में पता चल गया कि MNPI पे आप उस टीम में थे और आपको पता था कि आपका जो कोवर्कर है वो इस पे एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे अगर आप साइलेंट रहे तो स्टैंडर्ड सेकंड ए आपका वायलेट हो गया. सो यहाँ के की पॉइंट्स क्या हैं? अगर आप लोग प्लीज साथ साथ लिखना चाहते हो लिख लो, जो आप मैं बोल रही हूँ आपको नोटबुक बनाओ. आज लिखेंगे, आज क्यूरियोसिटी जनरेट करेंगे माइंड में, तो ही काम आगे चलेगा. सो इंफॉर्मेशन इज मटीरियल अगर उसका डिस्क्लोजर अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी. दिस इज ट्रू फॉर पब्लिकली लिमिटेड कंपनीज. इनफैक्ट ये बाय एंड लार्ज जो ये MNPI है ये बाय एंड लार्ज पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज के लिए होता है, या फिर कंपनीज लाइक जोमेटो जो कि अभी बस पब्लिकली लिस्टेड होने वाले हैं. उन लोगों के लिए तो ये बहुत सेंसिटिव हो जाता है कि कितने प्राइस पे IPO पे क्या मैनेजमेंट सोच रही है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एक्चुअली में क्या सोच रहे हैं. सो द इंफॉर्मेशन इज नॉन पब्लिक until it is made available to the marketplace. यानी कि जब आपके मार्केट में न्यूज फैल गई, न्यूज चैनल्स वालों ने भी दिखाना शुरू कर दिया, इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट, इन सब में भी आना शुरू हो गया, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आना शुरू हो गया, ट्विटर पे रिलीज कर दी कुछ स्टेटमेंट्स, तो वो तो फिर मार्केट प्लेस में आई गई है. सो इंफॉर्मेशन इज मटीरियल अगर वो प्राइस ऑफ सिक्योरिटी को डायरेक्टली इंपैक्ट करे, अगर उसका डिस्क्लोजर. इंफॉर्मेशन इज नॉन पब्लिक until it has been made available to the marketplace. Okay, so मैं आपको एक example बता रही हूँ that you are VP Finance and you tell your brother-in-law, ठीक है, that you know what, sell shares of my company. बिकॉज यहाँ पे तो वर्कर्स ने स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी है एंड 3 months तक कोई प्रोडक्शन नहीं होगा. ये जो प्रेस रिलीज है स्ट्राइक को लेके, वी विल डू दिस प्रेस रिलीज इन द नेक्स्ट 2 to 3 days. नाउ यू एज अ VP फाइनेंस, हैव यू वायलेटेड स्टैंडर्ड सेकंड A और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ठीक है, तो यही सिचुएशन है कि ये मटेरियल भी थी बिकॉज प्राइस ऑफ सिक्योरिटी को डायरेक्ट इंपैक्ट करेगी कि 3 महीने कुछ हो ही नहीं सकता है, कोई प्रोडक्शन ही नहीं हो सकती है. प्रोडक्शन नहीं होगी तो सेल कहां से करेंगे? इन्वेंट्री तो लिमिटेड ही रहती है कंपनीज में. और अभी ये नॉन पब्लिक भी थी क्योंकि ये पब्लिक 2 to 3 days के बाद होनी थी. However, the opposite is that you are making analysis. अभी एज एन एनालिस्ट हमने एनालिसिस ही तो करना है ना, in which you use public information and it is combined by non-material, non-public information.
then we are good, then it is okay. तो क्या आप लिख सकते हो ये चीज कि what is okay? Okay is a combination of using public information and non-material, non-public information. What is not okay is this. What is not okay is this. You should not act upon it. तो जो मैं आपको जेल टर्म की भी बात बता रही थी, तो कई बार क्या होता है कि जो कंपनी के जो इनसाइडर्स होते हैं ना, तो दे इंडल्ज इन समथिंग नोन एज इनसाइडर ट्रेडिंग. Insider trading. Anybody knows about Franklin Templeton? Franklin Templeton, one of the leading fund houses of India. So they had couple of debt schemes, and they just come up one day, one good morning, and they just say that they are discontinuing 3 schemes. The fund managers or the team, the senior management, they say and they come कि they are discontinuing these 3 schemes. मतलब ये 3 schemes तो ट्रेड ही नहीं होंगी मार्केट में, तो नहीं ट्रेड होंगी तो इन्वेस्टर्स के पास क्या ऑप्शन होगा? बाय सेल का भी ऑप्शन नहीं होगा. तो दे हैव टू वेट until and unless a time comes wherein Franklin Templeton, the finance team, they reimburse their investments back to these investors. अब इसको तो बहुत टाइम लग जाता है, 6 to 9 months भी लग जाते हैं, whatever. तो जो इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी, इन्वेस्टर्स लाइक आवर पेरेंट्स, आवर फ्रेंड्स, आवर फैमिली मेंबर्स, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, who would have really invested their hard earned money in mutual fund and picked up even debt investment. अभी equity भी नहीं लिया था, balance भी नहीं लिया था, sector specific भी नहीं लिया था, मतलब advance तो मैं बोल ही नहीं रही हूँ, basics जो जिसमें कम रिस्क होता है, debt schemes उठाई थी, उसको भी यहाँ पर जिसको कहते हैं discontinue कर दिया गया. So this happened during the last lockdown, जब pandemic hit ही हुआ था इंडिया में. So probably somewhere in the second quarter, or rather for our financial reporting purposes, first quarter of 2021. So later on it was found that the senior management of CF Franklin Templeton, उन्होंने क्या किया, जब तक ये म्यूचुअल फंड ऑपरेशनल थे मार्केट्स में, दे सोल्ड ऑफ अपने भी, अपनी वाइफ के भी. अगर कोई सीनियर मैनेजमेंट गाय या पोर्टफोलियो मैनेजर है, उसने अपनी जो बीवी के नाम पे भी लिए हुए थे इन स्कीम्स में पैसे, उन्होंने पहले सेल किए और बाद में ये पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ. तो यहाँ पे बहुत बड़ा वायलेशन था. एंड उनको एक तो होता है या तो जेल में डाल देंगे, या तो इतना बड़ा जो फियास्को है, दे हैव टू पे लिटरली समवेयर बिटवीन 5 to crores इन रुपीज. और जितना उन लोगों ने जो सेल किया था ना, वो वापस इस फंड में चला गया जो कि इन्वेस्टर्स को दिया जा रहा है. सो द repercussions are very high if you trade on an information that is very material and not yet public. On the contrary, if as an analyst we'll be in a good position jahan pe we are using public information and we are combining it with your non-material, non-public information. Iska technical term hai mosaic theory. Mosaic theory. So mosaic theory is okay, kar sakte hain. Okay, we move on next to an example. Yeah, next is your market manipulation. Market manipulation जो है, again I think कहीं ना कहीं we have discussed couple of things जहां से market manipulate हो सकती है. So let us read this more properly. Members and candidates must not engage in practices that distort prices or artificially inflate trading volume with the intent to mislead market participants. तो यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं हमको क्या होना चाहिए, P और Q, which means focuses on 2 areas. और अगेन ये मार्केट मैनिपुलेशन पब्लिक मार्केट के लिए है, आपकी प्राइवेट के लिए यहाँ पे नहीं है. पब्लिक मार्केट के लिए ही ये बाय एंड लार्ज ये स्टैंडर्ड है. सिक्योरिटी वैल्यूज एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम्स. सिक्योरिटी वैल्यूज P हो गई, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स Q हो गया. इफ यू आर इन एनी वे trying to manipulate P, you have violated standard second B. If you have tried to manipulate Q, you have violated standard second B. और यहाँ पे आपने violate करा है कि नहीं करा है, उसका एक और भी एक pointer होता है, that is intent to mislead. So you would judge whether there was an intent to mislead या फिर वो गलती से हो गया, ठीक है.
So this is actually a very key point over here. Please write down these two things. अब मैं आपको एक सिचुएशन बता रही हूँ कि कोई एक न्यू एज फिनटेक फर्म है, अपकमिंग न्यू एज फिनटेक फर्म है, एंड इट हैज जस्ट रिसेंटली गॉट लिस्टेड, बट उसने देखा कि बहुत अच्छा इतना रिस्पॉन्स आ नहीं रहा, बट अकॉर्डिंग टू द फर्म उनका तो ग्रोथ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो उनका शेयर प्राइस तो ऊपर जाना चाहिए ना, उनका शेयर प्राइस कुछ ज्यादा ही रेंज बाउंड है. सो दे अप्रोच यू एज एन एनालिस्ट, और आप एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हो. वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि भाई किसी ना किसी तरीके से आप कुछ ऐसा करो कि हमारा क्यू बढ़ता रहे, क्योंकि अगर क्यू बढ़ता रहेगा ना, डिमांड बढ़ती रहेगी ना, तो पीबी बढ़ना शुरू हो जाएगा. ठीक है. आप क्या करते हो एज एन एनालिस्ट, आप एक कुछ और नाम से, कुछ एक फिक्टिशियस डमी नाम से आप ये सारे के सारे इन्वेस्टर ग्रुप्स पे जाते हो, मे बी मनी कंट्रोल के फोरम पे चले गए, ट्रेंड लाइन पे चले गए, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर फोरम्स हैं पब्लिकली, और आप अपना एक न्यू पेज भी क्रिएट कर देते हो. वहां उस पेज की हेल्प से आप उस लिंक्स के थ्रू आप उनको ट्वीट भी कर रहे हो, लिंक्डइन पे भी जा रहे हो, स्नैपचैट और जहां जहां और सोशल मीडिया है, आप वहां पे खूब इस कंपनी के बारे में तारीफ कर रहे हो. सो फिनटेक फर्म, लेट अस से फिनटेक फर्म एबीसी, high growth potential, will be a multi-bagger. You know what is a multi-bagger? Multi-bagger मतलब जो hundreds में आपको मतलब वो बहुत अच्छा compounding rate of return दे दे. These are like multi-bagger stocks. So it will become a multi-bagger in near term and whatnot. So as an analyst, are you doing the right thing, or have you violated standard second B? Violated, ma'am. This directly leads to artificially inflated Yeah, income. right. Now is it happening? Yes, ma'am. Yeah. Okay. And can you see my PPT also? Yes, ma'am. Yeah. All right. Let's get back now. It is standard 3. This is the last standard that we have to do today. जितना हो जाएगा ठीक है, full हो जाएगा तो full हो जाएगा, because last 2 तो वैसे भी आप book में भी देख लो बहुत छोटे-छोटे से हैं. So over here, the beginning 3, first 3 A, B, C ही ज़्यादा हमारे लिए important है. But again, we will go with our own pace. हमको कोई जल्दी नहीं है. We can cover in the next weekend also. So this is now we are on to where we are going to speak more about from our client's point of view. ठीक है. Now we are going to think from our client's point of view कि clients के लिए क्या best है. जैसे हमने एक example तो कर ही लिया, oversubscribed IPO वाला, that in case we have oversubscription, we should and we must give priority to our clients. The first obvious thing that we have to do is we have to be loyal, प्रूडेंस एंड केयर फिर से रिपीट हो रहा है. जैसे हम अपने एनालिसिस के टाइम पे हमने केयरफुल रहना था स्टैंडर्ड 1B में, अगेन फॉर आवर क्लाइंट्स आल्सो वी हैव टू बी केयरफुल. व्हाई? बिकॉज वी आर अल्टीमेटली गोइंग टू मैनेज आवर क्लाइंट्स मनी ओनली, है ना. सो वी हैव टू बी केयरफुल. इट्स नॉट दैट कि हमारी मनी है या हमारे एम्प्लॉयर की मनी है, डायरेक्टली हमारे क्लाइंट्स की मनी यहाँ पर लगी हुई है. सो वी हैव टू बी केयरफुल. सो आई विल रीड दिस समरी. Members and candidates have a duty of loyalty to their clients and must act with reasonable care and exercise prudent judgment. Members and candidates must act for the benefit of their clients and place their clients' interest before their employers or even their interest. तो क्या हम अंडरलाइन कर लें कि अपने से पहले तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, 1B में भी पढ़ लिया था, एम्प्लॉयर से भी पहले क्लाइंट को रखना है. ठीक है, ये अंडरलाइन करने वाली यहाँ पे बात है. बाकी तो ओके है, लॉयल है, प्रूडेंट है, केयर है, बाकी ओके है. But yeah, we will be looking at certain pointers over here. So the client interest always comes first, and obviously we are going to become asset managers, portfolio managers. So hota kya hai, we must manage them as per the approved documents. Can you write down one name of the most popular document? That is known as IPS. इसका फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो स्टेटमेंट, IPS. सो इन स्टैंडर्ड 3C ना, suitability, हम इसके बारे में और बात करेंगे. Currently, you just need to know that there are certain documents which have been approved by both clients as well as you. So now you have to manage assets according to these documents. Don't create any conflicting things in your workplace, क्योंकि फिर वो violation हो जाएगा. Next, make investment decisions in the context of total portfolio.
something which we will study all together, not in ethics, all together in a separate topic called portfolio management, कि total portfolio perspective क्या होता है. However, portfolio का इतना तो मैं आपको मतलब बता सकती हूँ. Let us suppose we have n number of securities in a portfolio. This and we are 1, 2, 3. Let us say it goes up to 15. So n is equal to 15. Now, individually from this 1 to 15, we will have some expected return of the security. We will have expected risk of these securities individually. But हमारा जो consideration है वो total portfolio पे होना चाहिए. What is the total portfolio return? What is the total portfolio risk? और उसके according ही हमने decision लेना है. ठीक है? Next, inform clients of any limitations in an advisory relationship. यानी कि आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर बन गए हो किसी क्लाइंट का, तो आप उसको बता दो कि यू नो व्हाट, आई थिंक मेरे को इक्विटी तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, मेरे को फिक्स्ड इनकम या क्रेडिट मार्केट के बारे में भी मुझे बहुत अच्छे से पता है, बट मुझे ना फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में मुझे नहीं पता. यानी कि मुझे कैश मार्केट के बारे में पता है, स्पॉट मार्केट के बारे में मुझे पता है, मैं आपको एडवाइस भी कर सकता हूँ, बट आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल इन द डेरिवेटिव सेगमेंट. तो अगर ऐसे भी कोई आपके पास कुछ लिमिटेशंस अगर आपकी खुद के एंड पे या तो इंडिविजुअल है या टीम की लिमिटेशन है या पूरी की पूरी कंपनी या फर्म की ही कोई लिमिटेशन है, उसको आप पहले से ही क्लाइंट को बता दो. फिर क्लाइंट को पता चल जाएगा कि उसको आपको हायर करना है या किसी और को हायर करना है. फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट बहुत ज्यादा वो HNI है, बहुत रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, उसकी विलिंगनेस भी है, एबिलिटी भी है और विलिंगनेस भी है. देयर आर टू एस्पेक्ट्स. Obviously we'll study more in portfolio management. तो वहां पे वो बोलता है कि ठीक है, मुझे तो करना था डेरिवेटिव सेगमेंट में, F&O सेगमेंट में भी मुझे ट्रेड करना था, मुझे तो कमोडिटीज में भी ट्रेड करना था, MCX में भी ओपन करना था अकाउंट्स, so on and so forth. So then you should tell him right away that sorry, we are not available, rather we are not capable. Last point is vote proxies in an informed and responsible manner. Proxies का किसको मतलब पता है यहाँ पे? Proxies, proxy क्या होती है? प्रॉक्सी स्टेटमेंट्स पता है आपको, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ हमने कभी अगर पढ़ा हो तो प्रॉक्सी स्टेटमेंट्स. सो ये इसमें क्या होता है, हम वोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्सी स्टेटमेंट्स. वी वोट यस और नो. समटाइम्स इट कैन हैपन, लाइक मैं अपना ही एग्जांपल बता देती हूँ, दैट आई वाज सपोर्टिंग दिस प्राइवेट इक्विटी क्लाइंट. It had about 250 odd companies in its portfolio. So if I had 25 to 30 companies in my portfolio, उन portfolios में कुछ important decisions होने होते थे. So company का management change हो रहा है, company ने कुछ important large block of assets अपने competitor से खरीदना है, कुछ M&A करना है. तो as key shareholders, or rather on behalf of my client who was as a private equity investor, who was a shareholder in that company, now we had to sign these proxy statements. So what I will do is I will read them out. मैं clearly देखती थी कि हाँ, ये जो कंपनी अपने resources को divest करने की बात कर रही है, जो funds ये लोग कैसे कैसे उसको use करेंगे, क्या ये ठीक है या ये गलत है. Then together with the legal department of my client, so वहां से हम लोग ये sign करवाते थे और हम proxy statements send करते थे. ठीक है. सो ये भी आपका अंडर 3rd A आ जाता है. सो देयर आर मेनी मोर पॉइंट्स ऑल्सो, वो आप अपने बुक से बाद में पढ़ लेना, बट दीज वर द फोरमोस्ट वंस जो मैंने अभी यहाँ पे लिख ली है. आई विल रिपीट अगेन. क्लाइंट इंटरेस्ट ऑलवेज कम्स फर्स्ट. मैनेज एसेट्स एज पर अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स. मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो. इन्फॉर्म क्लाइंट्स ऑफ एनी लिमिटेशंस. Vote proxies in an informed and responsible. So let's go to the 3rd B now, fair dealing. फेयर डीलिंग थोड़ा सा ट्रिकी है, और वो कहाँ ट्रिकी है मैं अभी आपको बता भी दूंगी. सो फेयर डीलिंग के पहले हम सिनॉप्सिस पढ़ लेते हैं. मेंबर्स एंड कैंडिडेट्स मस्ट डील फेयरली एंड ऑब्जेक्टिवली विद ऑल क्लाइंट्स when providing investment analysis, making investment recommendations, taking investment action, or engaging in other professional activities. I think by now we have read these things so many times. If now anyone asks you what, you know, as a or not you guys so have already kind of made your mind, but any of your other friends, your cousins, they would want to ask you as a CFA charter holder, as an analyst, what is it that I'm supposed to do?
They would have questions, whether to go for a CA or whether to go for the CFA program. So now you would say that, CA is more into accountancy. You would learn more about everything from financial accountancy to management accountancy to taxation to all the rules and regulations. But as analyst, now you are more concerned with providing investment analysis, making investment recommendations, taking investment action, engaging in other professional activities. So key points क्या हैं? सबसे पहले तो do not differentiate or discriminate any client. तभी आपके पास एक लिमिट भी है, do not accept lavish gifts. ये इसीलिए आ रही है ताकि आप discriminate भी ना कर पाओ. Next is, जहां पे ये word है ना, ये tricky part है. What do we mean by fairly? Fairly का मतलब है it does not mean equally. Why? Because अगर आप एक asset management firm हो और आप क्या कर सकते हो, आप कुछ अपने प्रीमियम सर्विस भी ऑफर कर सकते हो, प्रीमियम सर्विसेज भी आप ऑफर कर सकते हो क्लाइंट्स को, which obviously will be charged at a much higher rate. ठीक है, जिसके लिए आपको कुछ जो क्लाइंट्स हैं, अगर वो प्रीमियम सर्विसेज लेते हैं आपसे, डेफिनेटली दे विल बी पेइंग यू हायर. फेयरली का मतलब ये है कि ऑल द क्लाइंट्स दे शुड बी टोल्ड that there is this premium service. ये ना हो कि अगर आपको कोई एक HNI ही मिल रहा है तो ही आप उसको बता रहे हो कि ये एक प्रीमियम सर्विस है. No, that should be open for everyone. कोई नॉन HNI वाला भी अगर वो प्रीमियम सर्विसेज को अवेल करना चाहे तो कर ले. It really depends उसका अल्टीमेट लाइफ गोल क्या है, फैमिली गोल क्या है. So different service levels are acceptable. Then give all clients a fair opportunity to act on behalf of every recommendation. So this means कि आप अपने clients को आप टाइम दो. अगर कोई बाय टू सेल हो गई है, फॉर दैट मैटर अगर एक रेटिंग जो है पहले बाय थी उस पे सेल हो गई है, then you should be giving equal opportunity or fair opportunity to all your clients. ये ना हो कि अब आप क्या करो, कुछ clients को आप पहले कॉल कर दो that what Mr. Juneja, what is really going to happen is that our team is going to send an email in the next 30 minutes giving a rating of sell from buy. So I would just recommend that you place your sell order right away. And then in the next 30 minutes, the email is sent to all the clients. So this is not being fair. So we should give fair opportunity so that everyone can act upon your recommendations. Last some point पहले से बता चुके हैं. Do not take advantage of your position as an analyst in this industry to disadvantage your clients, which means that just ignore the share allotmentship in an oversubscribed IPO. थोड़ा सा बड़ा है suitability, but don't worry, easy भी है, but लेकिन थोड़ा सा ये बड़ा है, मतलब इसको समझना, इसका जो theory part है वो थोड़ा बड़ा है. Standard third C suitability. So suitability again, जैसे मैंने आपको बताया था ना, with the concept of IPS, investment portfolio state, investor portfolio statement. So यहाँ पे भी हम क्या करें, सबसे पहले हमें just पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ आपको. When members and candidates are in an advisory relationship with a client, आप financial advisor, for example, they must make a reasonable inquiry into clients or prospective clients' investment experience. आप literally क्या करो, जो आपका client है, पहली बारी आप उसको मिल रहे हो ना, आप उसका इंटरव्यू लो. That आपने क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था? अगर आपको कल शेयर मार्केट में, मैं आज आपका पैसा लगा दूं, अगर कल आपको 1 लाख रुपीस का नुकसान हो गया तो ठीक रहेगा, वो हो सकता है कि ठीक रहेगा. आप बोलो अगर 10 लाख का हो जाए तो वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, 10 लाख तो आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो. So make a reasonable inquiry into a firm's clients or prospective clients' investment experience, risk and return objectives, financial constraints. कुछ constraints हैं वो भी वो बताएगा, ये client ही बताएगा आपको. Prior keyword is prior. पहले ये सब कुछ जानो कि क्या हो रहा है, फिर उसके बाद make any investment recommendation or take investment action and must reassess and update this information regularly. मतलब अगर आप आज मिले हो तो 6 महीने के बाद फिर से आप अपने क्लाइंट को कॉल करो कि सर अभी भी वही है ना, कि आपको 1 लाख का नुकसान तो चलेगा लेकिन 10 लाख वाला नहीं चलेगा. हो सकता है वो बोले भाई मेरे को तो I have been I've become a heir to a very large will that has been left by my uncle. I've become a co-owner of an estate. तो अब तो 10 लाख के अब तो 20 लाख भी चलेगा मेरे लिए.
So this is about updating this information regularly. Then you will reassess. Determine what investment is suitable to the client's financial situation and consistent with the client's written objectives, mandates, constraints. ये जो written बात है ना, written objectives, ये कौन से document में होता है? ये आपका IPS में होता है. यहाँ पे एक example हम लोग देते हैं एक elderly couple के लिए. Now these elderly couples, they are retired. उनके पास बहुत limited resources हैं. अगर आप उनको बोल दो भी derivatives में आपको portfolio create कर देते हैं, IPOs में कर देते हैं, so these are risky adventures. For that matter, even stock market is like bit of risky. But ठीक है, थोड़ा allocation, probably 10-20% allocation to equity, remaining to the fixed income might be okay. तो आपको जो investment बताना है, जो recommend करना है अपने client को, it should be suitable according to the client's financial situation and consistent with IPS. IPS कब बनेगा? जब client और आप दोनों मिलकर ये decide करोगे कि टिक 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 करोगे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. Next is मैंने आपको बताई दी है, always take decisions with regard to total portfolio and not just individual securities. Total portfolio risk and return कैसे impact होगा if you are buying and selling your securities individually. That is what really matters to us. Then if your members and candidates are responsible for managing a portfolio to a specific mandate, strategy, जैसे कि इसमें आप example ले लो mutual funds का. Mutual funds have different styles, different strategies. So mutual fund जो manager भी है, अगर कोई आपका as a financial advisor है और अगर आप उसको manage कर रहे हो, so then उसकी जो भी investments हैं according to the mandate, strategy, style, so सब कुछ ये consistent होना चाहिए according to the stated objectives of the portfolio. यानी कि अगर कोई balanced mutual fund है तो वो equity और debt दोनों में कर सकता है. अगर mandate है that it is a growth mutual fund, growth equity mutual fund, तो खाली वो equity में ही करेगा 100%. Ma'am, what do you mean by mandate? Mandate ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं आपको examples बता रही हूँ ना mandate के. Ma'am, mandatory. What is it that it is mandatory for us to do? If it is a balanced fund, it is mandatory for us to allocate, let us say 50% to equity or debt. If it is a growth equity mutual fund, it is mandatory for us to invest only and only in equity securities. So mandate कहाँ से word आया? Mandatory से word आया. So यहाँ पे की पॉइंट्स क्या हो गए इन एडवाइजरी रिलेशनशिप. जब आप किसी को क्योंकि अगर आप देख सकते हो बहुत सारे CFA चार्टर होल्डर्स एज फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी होते हैं. द होल ऑफ आवर लेवल 3 इज एक्चुअली अबाउट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ओनली, वेयर यू आर लाइक अ फाइनेंशियल एडवाइजर. और मैंने तो आपको वैसे ही पहले ही बता दिया दैट वी आर गोइंग टू बिकम अ फाइनेंशियल डॉक्टर. पीपल विल अप्रोच अस. आप लोग अपना ये इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हो. वो तो आप अभी भी कर सकते हो. You don't have to become a CFA charter holder, at least in India. You have to get some licenses from regulatory bodies. And if you get that registered investment advisor license from Government of India, so you can again start. But yes, of course, CFA charter, CFA program जो आपको knowledge enhancing mode पे लेके चले जाएगा, no other program will do that. So in advisory relationships, members must gather client information at the beginning of the relationships in the form of IPS. जो अभी मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं, उसके accordingly आप discuss करो that this is broadly in IPS, this is our risk and return objectives. Then इसके accordingly asset allocation, that how much to debt, how much to equity, how much to gold, how to much to keep in cash. अब आजकल पैंडेमिक टाइम में कीपिंग कैश एज अ परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो, स्पेशली इमरजेंसी रिजर्व, एज एन इमरजेंसी रिजर्व, that has gained a lot of popularity. तो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स जो कि बहुत शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स होते हैं, they have gained a lot of prominence. हमें तो यहाँ पे कुछ पता ही नहीं है आफ्टर 30, 60, 90 डेज फिर से कोई अगर वेव आ जाएगी, फिर से कौन बचेगा नहीं बचेगा टाइप. सो लाइफ एट ऑल इज एट क्वाइट बिकम अनसर्टेन एट दिस पॉइंट इन टाइम. सो एसेट एलोकेशन जो है वो भी डायनेमिक ही होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू द मैंडेट that has been set in the IPS. So asset allocation हो गया. उसके बाद क्या करोगे आप? इंडिविजुअल सिक्योरिटी सिलेक्शन पे आ जाओगे. इंडिविजुअल सिक्योरिटी सिलेक्शन एंड परचेज ऑल्सो, बाय एंड सेल ऑल्सो.
देन लास्टली आप इस पोर्टफोलियो को मॉनिटर करोगे एंड रीअसेस करोगे कि इफ देयर हैव बीन एनी चेंजेस इन क्लाइंट सिचुएशन तो आप भी इसको चेंज कर लो. So lot of details in our portfolio management topic review. There is something also known as unsolicited trade request. One classic example is your firm changes a rating of a stock from buy to sell. Now this has been done, but a client calls you. Client calls you and say कि भाई I want to purchase more of this stock. Let us say the stock is ONGC. Example ही ले रही हूँ मैं. आपने तो लेकिन आपकी तो रिसर्च टीम ने इसको सेल पे डाल दिया है. आपको क्लाइंट का कॉल आ गया कि मुझे तो ONGC के और शेयर्स खरीदने हैं. तो अब आप क्या करोगे बताओ? Ma'am, because the information is not publicly disclosed yet, we should buy it. नहीं, ये तो पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं, ये तो आपके अपना जो रिसर्च टीम है ना, जो मैंने यहाँ पे आपको ये बना के दिया नहीं था, इफ इट्स स्टिल देयर, ये तो यहाँ पे हो रहा है. ये तो रिसर्च टीम ने अपना कुछ किया और वो रिकमेंडेशन चेंज कर दी फ्रॉम बाय टू सेल. ये तो और अपने क्लाइंट्स को सबको ईमेल भी कर दी. जनरली तो आजकल ईमेल ही करते हैं, और ईमेल भी कर दी सब क्लाइंट्स को. फिर उसके बाद ये क्लाइंट आता है और बोलता है कि भाई मुझे तो ये और खरीदना है ONGC में. तो फिर आपका क्या फर्ज बनता है, आप क्या करोगे? We'll discourage him to buy. हाँ, so we will actually first of all तो we will tell him that see, हो सकता है आपने हमारी ईमेल नहीं पढ़ा, हो सकता है आपने हमारा रिसर्च रिपोर्ट रिकमेंडेशन नहीं पढ़ा, बट क्लियरली हमने उसमें बोल दिया है कि ONGC को अब हमने बाय टू सेल कर दिया है. देन क्लाइंट स्टिल सेज कि मैं तो अभी भी बाय करना चाहता हूँ. फिर क्या करोगे? Then we'll go by the client's advice. सो इसमें अब आप क्या करोगे? एक तो आप ये, हाँ, तो आप उसके वो भी जा सकते हो. तो यहाँ क्या है ना, दिस इज ओपन एंडेड क्वेश्चन. ये पता क्या है, ओपन एंडेड हो गया यहाँ पे. यहाँ पर आपको कुछ 2 to 3 थिंग्स आपको CFA इंस्टीट्यूट वालों ने बोल दिया है कि इस ट्रिकी सिचुएशन में मिनिमम आपने ये चीजें तो करनी है. फर्स्ट आप क्या देखो, उसका IPS दोबारा देखो. क्या फर्स्ट ऑफ ऑल ONGC के शेयर्स वो अगर और इंक्रीज कर देता है तो क्या जो उसका रिस्क है और क्या जो उसका रिटर्न है उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है? क्या रिस्क, क्या मिनिमम इम्पैक्ट है? मिनिमम इम्पैक्ट है तो चलो ठीक है, क्लाइंट की बात मान लो. पर अगर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, इट इज अ वेरी हाई इम्पैक्ट, उसके पोर्टफोलियो में ONGC को और ऐड करने से जितना वो बोल रहा है इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा. हो सकता है पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा रिस्की बन जाए, which deviates from your IPS objectives. यहाँ देखो हमने रिस्क लिखा हुआ था ना, ये और ज्यादा रिस्की हो जाए जितना हमें डाइजेस्टिबल नहीं है. तो फिर भी लेकिन वो जो क्लाइंट है वो बोलता है मुझे तो लेकिन खरीदना ही खरीदना है. देन you kind of edit your IPS, एंड ये सारे प्रोसेस को आप डॉक्यूमेंट करो और ये डॉक्यूमेंट आप अपने एम्प्लॉयर को, अपने बॉस को भेज दो. एम्प्लॉयर को या कंप्लायंस डिपार्टमेंट को, मतलब आप बिल्कुल इस सब चीजों से कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो उससे बच जाओ. सो इफ यू विल डू दीज थिंग्स आप बच जाओगे. विच इज IPS को आप चेंज कर दिया, आपने क्लाइंट को पूरा समझा दिया, पूरी सिचुएशन को आपने एक ईमेल पे, एक मेमो पे अपने एम्प्लॉयर को, विच विल बी योर बॉस या कंप्लायंस डिपार्टमेंट, उसको ईमेल कर दिया. So generally by telephonic conversation or an email we cannot change this. IPS cannot be considered नहीं. that statement into IPS. नहीं, IPS is a written one और इसको चेंज करने का भी एक फॉर्मल प्रोसेस ही रहेगा. The client again will approve this new IPS. But in that time there will be a fluctuation in the rates of the stocks Yeah. or shares. And Yes, I agree. But then what to do? We have to go by the process also. So actually this is a situation where clients को पहले बताना भी चाहिए. Clients जब आपके साथ ये आप देख रहे हो ना, जब आपका एडवाइजरी रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है इन द बिगिनिंग, ये सारी चीजें एक डॉक्यूमेंट पे कहीं ना कहीं आपके फर्म को या आपको खुद बतानी भी चाहिए कि अगर कहीं ना कहीं अगर IPS जो है वो ऑल्टर होगा तो हमारा ये प्रोसेस है, ऐसे हम आपसे उसको अपडेशन मांगेंगे और तभी हम आगे बाय एंड सेल करेंगे उसको. सो ये सब चीजें आप पहले से डिस्कस कर लो.
सो व्हाट इज सूटेबिलिटी? सूटेबिलिटी अगर ब्रॉडली मैं बात करूं, सूटेबिलिटी का बस यही मतलब होता है कि आप ऐसा कुछ मत करो जो आपके क्लाइंट के लिए अनसूटेबल हो, दैट इज इट।